So silk is a natural protein filament. It is not fiber, it is a filament. Means a very long length, maybe in hundreds of meters, we are getting from the silkworm in the form of filament. And because we are getting from silkworm, so it is put in the category of animal fiber. So silk is a natural protein filament because it is formed from amino acids. So it is put in the category of protein fibers spun by silkworm for its cocoon. Silkworm spins it to form its cocoon, and that cocoon is used as a filament of silk. Its density is 1.34 grams per cubic centimeter. So it is considered as medium fiber, same as wool. The silkworm is actually a caterpillar, or you can say larva, of the silk moth. So the silkworm which is producing this filament is a caterpillar or a larva of the silk moth. And the particular species of this silkworm which is domesticated, that is named as Bombyx mori. So Bombyx mori is the name of the species of silk moth which is producing domesticated silk. And its cocoon is the shell. Shell means covering. Its cocoon is the shell it constructs to protect itself during its growth from caterpillar to chrysalis to moth. So this is a very mysterious way of life, and very interesting for all of us, that this worm is spinning or forming a cell just to protect itself so that it can grow into its later stage known as chrysalis stage, and then into the moth, which is a adult form of this worm. So during this growth, it needs its protection, and for that protection, it is forming the shell that is known as cocoon. And this cocoon is taken as silk filament, and we are using this cocoon for our textile purposes. A single cocoon is made of a continuous filament of silk, which the silkworm extrudes from its body and throws about itself layer upon layer, making a thick, smooth, symmetrical wall. So in this paragraph, the whole process is given in brief. The whole process of this formation of silk is given in this paragraph. So this will be a very abstract to understand this silkworm's life cycle. A single cocoon is made of a continuous filament. जो cocoon है वो एक continuous filament है silk का, जो कि silkworm extrude करता है, यानी कि extrusion होता है उसकी बॉडी से, उसकी ग्लैंड से वो एक लिक्विड एक्सट्रूड करता है और उसको थ्रो करता है अपने चारों तरफ, अबाउट इटसेल्फ, खुद की बॉडी के चारों तरफ उसको थ्रो करता है, लेयर अपॉन लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बिल्ड होती है, मेकिंग अ थिक, जिससे क्या होगा, एक थिक स्मूथ सिमेट्रिकल वॉल बन जाएगी उसके चारों तरफ, एंड दैट वॉल, that particular thick smooth symmetrical wall is known as cocoon. Along with the silk filament, the silkworm emits a gummy substance called sericin. Silk filament के साथ साथ ये जो सिल्क फिलामेंट के साथ, सिल्क फिलामेंट जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी के साथ में ये एक और गमी सब्सटेंस भी एमिट करता है, एक्सट्रूड करता है, विच इज नोन एज सेरेसिन.
Along with the silk filament, the silkworm emits a gummy substance called sericin. This is the cement that glues the silk filament into a firm, hard cocoon. ये एक cementing material है. What is sericin? It is a cementing material which is gluing the silk filament into a firm, hard cocoon. एक firm, hard cocoon के अंदर इसको form कर रहा है. A single raw silk filament. एक सिंगल फिलामेंट जो है रॉ सिल्क कंप्राइजेस ऑफ फाइनर फिलामेंट्स कॉल्ड द फेब्रोइन. जो एक रॉ सिल्क फिलामेंट है उसमें क्या क्या होता है? फाइनर फिलामेंट्स जिसको हम फेब्रोइन बोलते हैं, विच आर ट्रायंगुलर इन शेप, जिसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर होता है, एंड ईच फेब्रोइन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय ए गमी सब्सटेंस कॉल्ड द सेरेसिन. सो एट अ टाइम two filaments are extruded from two glands of silkworm, and that is known as silk filament, and it is made up of protein that is called fibroin. This is a fibroin which is a fibrous material of silk. As cellulose of cotton, keratin of wool, fibroin is the cellulosic, fibroin is the fibrous material, or you can say name of polymer of silk, which are triangular in shape. Means उनका cross section, दोनों का cross section triangular होता है, and each fibroin filament is surrounded by a gummy substance. और दोनों में से हर जो fibroin filament हैं वो surrounded होता है एक gummy substance जिसको हम sericin बोलते हैं. So silk filament plus sericin, these two are secreting from two glands at one side, and again the same pair is secreted at the other other end, or other gland at the other end. And it can be understood like from this diagram. This red part, both sides, the red part is indicating fibroin filament, which is known as brin, B-R-I-N, which is known as brin. This fibroin part indicated by red color at both sides in the diagram is indicating brin, and this cementing material sericin, this white part is surrounding this brin, and this white part is surrounding this brin, this fibroin, and this white part is made up of sericin, the cementing material. So we are getting one unit in which there are two brins and one covering of sericin. So this whole unit is known as silk filament. The silk filament as obtained from the cocoon is called a bave. और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? Bave. इन दोनों को separately brin बोलते हैं. Cementing material जो है वो sericin है, और overall जो unit है उसको हम बोलते हैं bave. So the silk filament is consisting of two brins, or means two fibroin filaments, which are cemented with this gluing material known as sericin, and we are getting a bave, which is a complete unit of silk filament. Silk producing countries are in a sequence: China, India, Italy, France, Spain, Austria, Syria, Brazil, Bulgaria, Turkey, and Greece. These are the important or major silk producing countries. Yes, now a very interesting topic, and the main topic of this silk is production of silk. And production of silk filament consists of two important stages. First is known as sericulture, and second one is known as extraction. Sericulture means production of reeling cocoons. So here we are producing cocoons which can be reeled into filament. So the first stage consists of production of cocoons, and this comes under agro-industry. This is part of agro-industry. And second step is after formation or production of cocoons, this raw silk is extracted or reeled. That is known as extraction or reeling of raw silk. Means from cocoon, we are extracting the filament
and that extraction is known as reeling of raw silk. So the whole process or production process of silk filament can be divided into two stages. First one is sericulture, means production of reeling cocoons, and second one is extraction, means reeling of raw silk. So sometimes a combined question may be asked, uh, explain the production of silk filament. It means you have to explain both the stages. But sometimes uh, only one question may be asked only on one stage, explain the production of reeling cocoons. Then you have to just answer the part that is known as sericulture. And sometimes it may be asked, explain the reeling of raw silk. Then you have to explain only the second stage. So depending on the question, you have to answer accordingly. Now sericulture, the first stage, and which is done in the industry, which that industry that is part of agro industry, but that particular industry is named as magnaneries. The place where sericulture is taking place, that place is known as magnaneries. The culture of silk, sericulture means the culture of silk is the care of little creature that produces the silk filament. Here please correct the spelling, creature, C-R-E-A-T-U-R-E. Mistake is there, so correct it. The culture of silk is the care of little creature that produces the silk filament from egg to cocoon, and with breeders to the moth as well. Means these are the different stages of its life cycle, which we will take detail, in detail. So this life cycle, to complete this life cycle, we are carrying this little creature in the magnaneries, and that process is known as sericulture. Silkworm completes its cycle, the life cycle in sericulture. Silkworm जो है अपना पूरा life cycle sericulture process के दौरान complete करता है, और उसी process को हम sericulture बोल रहे हैं, जिसमें silkworm अपना life cycle complete करता है. The worm passes through 4 stages during its life cycle. पूरे लाइफ साइकिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. जैसे हमने ह्यूमन बीइंग को डिवाइड किया हुआ 4 पार्ट्स में लाइफस्टाइल को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, देन वानप्रस्थ आश्रम, देन संन्यास आश्रम, but that is total complete life of human being. Similarly, the worm is also passing through 4 stages during its life cycle, and in each it has a specialized and interesting function. Similar as human being, we also have some specialized and interesting function during different phases of life. Similarly, this worm also passes through 4 stages during its life cycle, and in each it has a specialized and interesting function. No trace of it being left in the stage following it. एक stage का कोई भी effect next stage में नहीं होगा. No trace of it being left in the stage following it, which is not possible for human being. However, human being can also live the life in such a manner that no trace may found into the next stage, but we are not able to follow it, and that is a separate topic about which we can talk separately. The establishment of sericulture is called magnaneries, and this is the life cycle shown with the diagram. Egg stage, then caterpillar or larva stage. Caterpillar is also known as larva, or it is also known as silkworm. So silkworm, larva, caterpillar is the same thing. And in the diagram we are showing how it looks, how the larva or caterpillar looks. So from egg, it converts into larva stage or caterpillar stage or silkworm stage. Then it extrudes the liquid and forming the cocoon and winding it onto itself and forming a shell. And this larva is covered by this shell, which is known as cocoon. And then if we are not killing this larva inside the cocoon, then it grows into moth, that is adult moth. So this is a complete life cycle of silkworm, from egg
larva or caterpillar or silkworm, from this larva or caterpillar to cocoon stage, and when it completes, this is known as chrysalis, and then this chrysalis is converted into adult moth if we are not stopping or we are not killing the caterpillar inside this chrysalis at this stage. So to get the silk filament, a continuous silk filament, we stop the this life cycle at, we terminate the life cycle at this stage by killing the larva or caterpillar inside the cocoon. So in that case, it will not convert into adult moth. So to get breeder moths, which can again lay the eggs, what we are doing, for some of the silkworm, we are not killing them at this stage. We are not killing them, and we complete the cycle. So we get breeder moths which can lay eggs. So breeder moths lay eggs, eggs convert into larva, larva convert into cocoon, and then it convert into adult moth. But to get a continuous filament, here we are terminating the life cycle of this silkworm so that it cannot convert into adult moth. And after killing this worm inside, we can extract or we can reel the raw silk and we can get a continuous filament. If we are not stopping it, then moth will come out. So this will get break into thousands of pieces and we cannot get a continuous silk filament. These are the 4 stages: egg, caterpillar, chrysalis or cocoon, and the moth. Caterpillar is also known as larva or silkworm. So these are the 4 important stages of life cycle of silkworm indicated with the help of diagram. The silk moth, as I have mentioned, the silk moth lays eggs, which emerges as teeny, newly hatched silkworms. In egg से, in egg को जब hatch करते हैं for a particular time period, उसमें से silkworm बाहर आता है, silkworm emerges out and grow into adult through continuous feeding on mulberry leaves. और ये इसका जो food है, that is mulberry leaves. मलबरी प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनको ये खा करके ग्रो करता है. तो ग्रो इनटू एडल्ट, एडल्ट में ग्रो होगा, कंटिन्यूस फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स. मलबरी लीव्स पर कंटिन्यूसली खाने के बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है. इट बिगिंस टू स्पिन इट्स सिल्क कोकून अराउंड इटसेल्फ एंड डेवलप इनटू द क्राइसलिस. जो वर्म है वो अपने चारों तरफ कोकून स्पिन करता है और जब वो पूरा स्पिन हो जाता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू क्राइसलिस स्टेज व्हिच इज आल्सो नोन एज प्यूपा. सो एग टू कैटरपिलर और सिल्कवर्म, सिल्कवर्म और कैटरपिलर और लार्वा टू क्राइसलिस और प्यूपा, एंड देन it get converted into moth. If we are not terminating the life cycle at this stage, then it get converted into moth. So here at this step we have 2 options: either we kill the larva or worm inside and we get a continuous filament of silk, then it will not get converted or it will not grow into the moth. But sometimes we need also breeder moths of good quality of breeder moths. So some of the larva or caterpillars are not killed at this stage, and then it grow into moth stage, and again these moth lay eggs and this cycle continues: egg, caterpillar, chrysalis, moth, again egg, caterpillar, chrysalis, moth. So this cycle goes on continuously, and that is known as life cycle of silkworm, which we have also understood with the help of diagram. Now we will take details of each step of life cycle of this silkworm. So first stage is egg. The eggs from the selected breeder moths produce disease-free worms are put in cold storage. Only those breeder moths are used which are giving good quality, means disease-free worms. Those are only used as a breeder moths, not all. Are put in cold storage. These eggs are put into cold storage until the mulberry plants begin to leaf. जब तक mulberry plants के ऊपर leaves आना start होती हैं, तब तक हम इनको cold storage में रखते हैं eggs को.
द फीमेल मोथ लेज अबाउट 500 एग्स। एक फीमेल मोथ एक बार में 500 एग्स देती है। Then they are placed in an incubator at around 25 to 27 degree centigrade. फिर उनको हम एक इंक्यूबेटर में रखते हैं जहां पर पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है at around 25 to 20 degree centigrade. The incubation time is 8 to 10 days. 8 से 10 दिन लगते हैं इंक्यूबेशन में. After which a caterpillar is hatched. एग में से एग हैच होने के बाद एक कैटरपिलर बाहर आता है. And 1 gram of egg will produce around 1500 to 2000 silkworms. 1 ग्राम एग से हमें 1500 से 2000 silkworms प्रोड्यूस होते हैं. Second stage is caterpillar, larva or silkworm stage. It is a larva about 2 to 3 mm long and 5 milligram in weight. जो larva हमें start में मिल रहा है after hatching of the eggs, उसका size है 2 से 3 mm लंबाई होती है, वो छोटा होता है और बहुत हल्का होता है, just 5 milligram weight. The larva requires careful nurturing in an environment of fresh air and cleanliness. That is must for good growth of or to get a good quality of silk. The larva should be nurtured carefully in an environment of fresh air and cleanliness. The caterpillar does nothing but eat fresh mulberry leaves. इसका और कोई काम नहीं होता है. It eats only mulberry leaves continuously except 4 periods of sleep a day. दिन भर खाना और 4 बार सोना. कुछ आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे या हम में से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जस्ट कैटरपिलर जैसा ही लाइफ जीते हैं, ईटिंग एंड स्लीपिंग फॉर नेक्स्ट 20 to 30 days. अगले 30 दिन का काम इनका है खाना और 4 बार सोना, और मलबरी लीव्स को खाते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेट इंक्रीजेस टू 1000 टाइम्स. और इतना खाते हैं और इतना सोते हैं कि इनका वजन लगभग 1000 गुना बढ़ जाता है. जो 5 मिलीग्राम का वो लार्वा था वो बन जाता है 5 ग्राम का. एंड मेजर्स 5 to 9 सेंटीमीटर इन लेंथ. 2 से 3 mm की जो लंबाई है वो 5 से 9 सेंटीमीटर हो जाती है व्हेन फुली ग्रोन, जब पूरा ग्रोन होते हैं. ईटिंग फ्यू डेज एंड स्टॉप. नाउ अगेन ये तो दिन भर का रूटीन था इसका. अब ये क्या करता है इस 30 डेज के अंदर, ईटिंग फ्यू डेज, कुछ दिन खाता है फिर व्रत करता है यानी कि स्टॉप करता है. एंड एक्सुविएट्स ओल्ड स्किन, और अपनी जो ओल्ड स्किन है उसको स्लफ हो जाती है यानी कि हटा देता है. एंड एक्वायर्स न्यू, और नई स्किन आती है. अगेन स्टार्ट ईटिंग, और ये होता है 4 बार. दिस एक्सुविएशन प्रोसेस जो है which it exudates old skin and acquires new, it happens 4 times. It repeats for 4 times, and in the 5th instant, 5वीं बार के बाद ये completely इसको stop कर देता है. Now it stops to eat and begin to lift its head. और अब खाना बंद करके ये दूसरा काम शुरू करता है, अपने हेड को ऊपर उठाता है and searching for something for the secretion of the filament. अब ये सेक्रीट करेगा फिलामेंट को. खा लिया, अब निकालने का काम है. तो सेक्रीशन ऑफ द फिलामेंट. सो फॉर दैट इट सर्चेस फॉर समथिंग, एंड दिस सेक्रीशन ऑफ फिलामेंट इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ कोकून. एट दिस टाइम इट इज जनरली ट्रांसफर टू ए स्पेशल फ्रेम कंटेनिंग ट्रफ और ट्रेज. फिर इनको हम उस समय पे एक स्पेशल ट्रेज और ट्रफ्स होते हैं जहां पर हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं. ऑन द ट्रे द वर्म स्टार्ट स्पिनिंग, और उस ट्रे पर ये अपना स्पिनिंग शुरू करता है. It moves its head from side to side. अपने मुंह को इधर उधर पूरा साइड टू साइड मूव करता है इन द फिगर ऑफ 8, और 8 का फिगर बनते हुए इसको मूव करता है. द फिलामेंट अराउंड इटसेल्फ फ्रॉम बैक टू फ्रंट एंड फॉर्म्स द कोकून, और बैक से फ्रंट की तरफ इसको स्पिन करना स्टार्ट करता है अपनी ही बॉडी के ऊपर, जिससे कोकून बनती है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पिनिंग. इट टेक्स 2 to 3 days. Then next stage comes after the completion of cocoon. The chrysalis stage comes. After spinning, the enclosed silkworm inside the cocoon undergoes a remarkable transformation. अब ये पूरा कवर हो गया अंदर किसके, कोकून के अंदर. जो सिल्कवॉर्म है उसने अपने ऊपर उसको रैप कर लिया है, तो ये इसके अंदर कवर हो गया है. वहां पर ये एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है. इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है. दैट इज चेंजेस फ्रॉम ए कैटरपिलर इनटू अ क्राइसेलिस. यहाँ ये कैटरपिलर से क्राइसेलिस में कन्वर्ट हो जाता है या प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है. और जो क्राइसेलिस है दैट
is a hard, inert and almost lifeless thing. ये एकदम हार्ड होता है, इनर्ट होता है, इनएक्टिव होता है और लगभग कह सकते हैं कि लाइफलेस है, यानी कि डेड की तरह है. Which after 10 to 12 days changes into a moth. और फिर अचानक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और 10-12 दिन के बाद ये मोथ में कन्वर्ट हो जाता है. सो ये करिश्मा है कुदरत का. The moth emerges from the cocoon by secreting a fluid. और ये जो मोथ है ये कुकून से बाहर आने की कोशिश करता है, बाहर आता है by secreting a fluid. एक फ्लूइड को सेक्रीट करता है जो कि डिसोल्व कर लेता है a section of the cocoon को, कुकून के एक सेक्शन को डिसोल्व कर लेगा and to make a hole through which it comes out. वहां पे एक होल बनाएगा जिससे ये बाहर आ जाएगा. The continuous silk filament is thus broken up into thousands of short pieces. और क्योंकि ये होल बनने की वजह से जो पूरा सिल्क कंटिन्यूस सिल्क फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाएगा thousands of pieces, छोटे छोटे पीसेस के अंदर, which are useless for reeling, जो कि reeling के लिए यूजलेस है. So the life cycle is terminated at this stage. इसीलिए हम इसके लाइफ साइकिल को यहीं टर्मिनेट कर देते हैं और इसको कुछ को छोड़ के हम इसको मोथ में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं, so that we can get continuous silk filament. And the last stage is known as moth stage. The moth is whitish gray insect. जो moth है whitish gray कलर का होता है, एक insect है. It has no mouth, इसका कोई मुंह नहीं होता है, इसलिए कोई eating नहीं करता है, and therefore doesn't eat and is unable to fly. और ये fly भी नहीं कर पाता है. It lives for 2 to 4 days, केवल 2 से 4 दिन जीता है. And the sole job, the only job of the silkworm is, the moth is to reproduce about 300 to 500 eggs and then die. यहाँ silkworm की जगह आप इसको moth कर लें, करेक्शन कर लें. Of the moth is to reproduce about 300 to 500 eggs and then die. इसका केवल एक ही काम होता है, eggs देना, और इसकी लाइफ 2 से 4 दिन की होती है, and then it dies. And that is complete life cycle of silkworm. Now formation of cocoon we will take in the next class. We will take this topic, how the cocoon is formed during this life cycle, in next class, because now we have only 2 to 3 minutes. So we will stop the class here. You can have some questions because we have still 2.5 minutes. Okay, I think you do not have any question. So we will end the class. Again, repeating the same mantra 3 times with Shanti. You can accompany me if you wish, but a reminder for attendance and screenshot. Thank you. आप सबका दिन मंगलमय हो, अच्छा हो. अपने दिन को पूरा यूटिलाइज करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, खूब पढ़ाई करें और बड़ों का सम्मान करें. पेरेंट्स को काम में हाथ बटाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो कोविड के रूल्स आए हैं, कोविड की गाइडलाइंस आई हैं, उनको पूरी तरह से अक्षरश उसको फॉलो करें. भीलवाड़ा और बाकी सब जगह पर संक्रमण काफ़ी फैल चुका है. सो बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें, और बाहर निकलें तो जो भी कोविड की गाइडलाइंस हैं, मुंह और नाक को ढकना, कहीं स्पिट नहीं करना, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, और सैनिटाइजर अपने साथ रखें, और बार बार हाथ से साबुन से हाथ धोते रहें. और अब सबसे मेन है अपना इम्यूनिटी बिल्डअप करें, और अपना इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए आप अपने खाने पीने को सुधारें. साथ में कुछ एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम बहुत अच्छा है इस टाइम के लिए, क्योंकि प्राणायाम आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टर है. एंड इफ यू कैन ऐड सूर्य नमस्कार, देन सोने पे सुहागा है. सो इन द मॉर्निंग और इवनिंग, वट एवर टाइम्स सूट्स यू, प्लीज डू 7 times सूर्य नमस्कार and 5 minutes भस्त्रिका, कपालभाति एंड अनुलोम विलोम.
Thank you so much.